Hello students, welcome to Omsar's Academy. In this session we are going to learn class 10th Maths Chapter 2 Polynomials Part 5. We will be learning how to factorize the quadratic polynomial by splitting the middle term method and finding the zeros of a polynomial, and mainly we'll be learning verifying the relationships between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. Hello students, welcome to Omsar's Academy. In this video we are going to learn a new topic, that is verifying the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So friends, you will be given many sums in this chapter that you have to verify the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Okay, so here it is just the definition that how we can verify the relationship between coefficients and zeros of a quadratic polynomial. Okay friends, so let us start. Say quadratic polynomial has a degree 2, okay, and it will have max to max how many zeros? It will have 2 zeros. So let us assume that if that 2 zeros, out of that 2 zeros, if alpha is 1 zero and beta is another 0, so alpha and beta are 2 zeros of a quadratic polynomial p of x equals to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, then sum of the zeros, ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मान लेते हैं कि 2 zeros आएंगे, एक 0 अल्फा आएगा, दूसरा 0 बीटा आएगा. इज इट क्लियर? तो हम उसके zeros का सम करेंगे. we will make the sum of zeros, that is अल्फा प्लस बीटा. तो उसका जो आंसर आएगा that will be equal to minus b upon a. What is minus b? Minus b upon a. It will be equal to b is the coefficient of x, so minus coefficient of x upon a. A is the coefficient of x square in this quadratic polynomial, so upon coefficient of x square. Is it clear? तो ये रूल आपको याद रखना है. This is the most important rule कि सम ऑफ जीरोस जो भी आएगा अल्फा प्लस बीटा करेंगे, वो 2 zeros जो आएंगे उनका सम करेंगे, वो इक्वल होगा. ये जीरोस की रिलेशनशिप है और ये कोएफिशिएंट्स की रिलेशनशिप है. तो दिस शुड बी इक्वल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? एंड इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, जो भी 2 zeros आएंगे पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा, उनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन. ठीक है, तो c is what? The constant term in this polynomial, that is c. Okay, तो c is a constant term and a is a coefficient of again x square. Is it clear? तो ऐसे let us take one example जिससे आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए. Say for example there is an polynomial p of x. Okay, we are just taking example. Okay, polynomial given is p of x and p of x की वैल्यू लेते हैं x square minus 3x plus 2. Is it clear? So this is a polynomial and if you are given that 2 zeros of a polynomial, ठीक है फ्रेंड्स. नाउ सी, इस केस में आपको या तो डायरेक्ट जीरोस दे दिए होंगे या फिर आपको ये भी कहा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल? वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द 9th standard factorizing the quadratic polynomial, right? So how we can factorize this quadratic polynomial? By splitting the middle term. Remember the method? If you have not remembered, then you can see the videos and refer to the 9th standard video of splitting the middle term. Okay, so splitting the middle term method. Okay, so first I am factorizing it and finding the zeros. So how we can find the zero, that also I am explaining it. So here सबसे पहले पॉलिनोमियल मेरा p of x क्या है? x square minus 3x plus 2. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की
फॉर्मूला जो है, मेथड है, वो क्या कहती है कि पहले टर्म का कोएफिशिएंट लो और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट इज माय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 2. सो 1 into 2 इज व्हाट? 2. ओके, तो मैंने ये दोनों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आंसर मिला 2. ठीक है, मैंने मल्टीप्लाइड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, आई गॉट आंसर 2. सो नाउ आई हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 in such a way that if I multiply that two factors, I get the answer 2. And if I add those two factors, then I get answer -3, that is middle term. Okay, so I can say that 1 plus 2 is 3. Okay, and 1 into 2 is 2. But I don't need this middle term as 3. Okay, तो यदि मैं यही दो नंबर लेता हूँ 1 और 2, तो 1 into 2 जो है फर्स्ट 1 into 2 is 2, और यही दो नंबर मैंने ऐड किए, जो दो फैक्टर्स लिए 1 और 2, वही दो फैक्टर्स मैंने ऐड किए तो मुझे सम क्या मिला? 3 मिला. ठीक है, सो आई एम गेटिंग मिडल टर्म एज 3, बट वेयरएज आई रिक्वायर मिडल टर्म एज -3, तो ये नहीं चलेगा. बट अगेन वी कैन से फ्रेंड्स, -1 into -2 करे then also we get the product as 2. okay, तो मेरे दो फैक्टर्स अभी कौन से हुए? -1 और -2. okay, now when I add these two factors, that is -1 plus -2 मैं ऐड करता हूं तो I get answer -3, that is my middle term. okay friends, so मेरे दो फैक्टर्स जो मैं लूंगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, वो होंगे -1 एंड -2. So this middle term I can split into two parts, that is -1x and -2x, that is -3x. Okay, and then plus first term जो था वो plus x square था, I put this as x square only, and last term था वो +2 था तो +2 ही रख दिया मैंने. तो इसको मैं अभी फैक्टराइज किया मैंने by splitting the middle term. ठीक है, तो हाउ वी कैन फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? आपको समझ में आ गया. पहले मैंने क्या किया? फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्रोडक्ट आई उसकी, दैट वाज 2. ओके, नाउ ये 2 के मेरे को सेकंड स्टेप इज आई हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. आई हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2. ओके, तो 2 के कौन से फैक्टर्स आएंगे? -1 into -2, ये मैंने दो फैक्टर फाइंड किए. पहले मैंने 1 और 2 लिया, 1 and 2, 1 into 2 is also 2, बट इफ आई एड दिस टू फैक्टर 1 plus 2 करता हूं मैं, तो मुझे मिडल टर्म +3 मिलता है, जबकि मुझे यहाँ मिडल टर्म क्या चाहिए था? -3 चाहिए था. तो आई कुड नॉट टेक दिस एज अ फैक्टर. ओके, फिर मैंने फैक्टर्स चेंज किए. मैंने क्या किया इसमें? -1 into -2 किया, देन ऑल्सो आई गेट एज अ प्रोडक्ट 2. ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलती है, एंड यही दो फैक्टर्स को मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिडल टर्म मिलता है, दैट इज -3. सो आई स्प्लिटेड द मिडल टर्म इन दिस टू फैक्टर्स -1 and -2. सो -1x -2x is what? -3x. Then the next step is taking common. Okay, so taking common out of this first pair, I can take x as a common. तो अंदर क्या रहेगा? x -1 माइनस ये सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन रहेगा. आई कैन टेक आउट 2 एज अ कॉमन इन दिस सेकेंड पेयर. सो अंदर क्या रहेगा? व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड? x -1. व्हाई -1 फ्रेंड्स? बिकॉज हियर outside this pair there is a minus sign, and if I put a bracket over here, this whole signs inside will get converted. Okay, so it will change. So this plus will become minus over here. Then this is my one factor. See, over here also I got x -1. Over here also I got x -1. So x -1 is my one factor, and the remaining digits, that is x -2, is my another factor. तो मेरा ये एक फैक्टर था और रिमेनिंग क्या था? x -2, ये दूसरा फैक्टर है. So these two are called as the factors of polynomial. What they are called as? They are called as the factors of a polynomial. Is it understood, friends? Now I am rubbing this. So
फर्स्ट स्टेप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मेरे को फाइंड करने हैं, तो आई हैव टू फाइंड द फैक्टर्स. ओके, एंड इफ आई इक्वल दिस फैक्टर टू जीरो, ओके, x minus 1 equals to 0, then x will be what? 1. This minus 1 I will take to that side, it will become 1. And x minus 2 equals to 0 करता हूँ तो मुझे x equals to क्या मिलेगा? 2. Okay, so these two values of x I have got when I put x factor equals to 0, and whatever values I have got of x, तो ये दोनों वैल्यू जो है, these two values are the zeros of a polynomial. These are called as the zeros of polynomial. So how many zeros I have got? Two zeros of a polynomial, that is 1 and 2. Is it clear, friends? Now how can I verify the relationship between the zeros and coefficient? Okay, so here I am verifying the relationship. Verifying relationship between zeros and coefficients of polynomial, of quadratic polynomial, of quadratic polynomial. Okay, I can write it as zeros and coefficients of quadratic polynomial. Now how can I verify the relationship, friends? तो सबसे पहले मेरे दो जीरोस आए थे. कौन से दो जीरोस थे? 1 and 2. So what I am taking is I am taking these two zeros at one is alpha and another is beta. Okay, so let two zeros be alpha and beta. So let two zeros be alpha. Alpha is what? 1. Okay, and beta is what? Beta मैं लेता हूँ 2. Okay, so these are my two zeros. जो मेरे x के दो वैल्यू आए वो मैंने अल्फा और बीटा ले लिया. इज इट क्लियर, फ्रेंड्स? नाउ मेरे को वेरीफाई करना है. उसमें पहली रिलेशनशिप जो वेरीफाई करनी है, दैट इज द सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस. ठीक है, यदि मैं जीरोस का ये सम करूं तो व्हाट इज माय फर्स्ट रिलेशनशिप? This is my first relationship and this is my second. So sum of zeros, that is alpha plus beta, should be equal to minus b upon a. Okay, so sum of zeros में what I am doing is first I am taking alpha plus beta. Okay, so let us do alpha plus beta. So what was my alpha? Alpha was 1 and beta was 2. तो ये zeros के sum करते तो 1 plus 2 that is equal to 3. Okay, तो सम ऑफ जीरोस किया मैंने तो मेरा आंसर क्या आया? 3 आया. इज इट क्लियर? सो दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. इज इट क्लियर? सो माइनस बी अपॉन ए इज व्हाट? दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. नाउ फ्रेंड्स, दिस वाज माय पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इज इट क्लियर, फ्रेंड्स? नाउ इसमें the standard form of polynomial is what? ax square plus bx plus c. This is the standard form of polynomial. Okay, so these should be the standard form of polynomial, quadratic polynomial. Now here instead of a, what is the coefficient of x square? X square का coefficient a होगा, x का coefficient b होगा and c last का constant term है. Is it clear? So instead of a, कोएफिशिएंट इज व्हाट? x स्क्वायर के आगे 1 कोएफिशिएंट है तो आई टेक a एज 1. ओके, देन इंस्टेड ऑफ b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो b की जगह x के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है? -3. सो वी कैन टेक b एज -3. ओके, एंड c is the last constant term. So here what is the last constant term? 2. So c is what? 2. Is it clear? तो यहाँ पे मेरे जो सम ऑफ जीरोस है, मैंने ये दो जीरोस का एडिशन किया वो 3 आया.
So that 3 should be equal to minus b upon a. Is it clear? So friends, यहाँ पे क्या करना है मुझे, माइनस बी, तो माइनस बी में क्या करना है, माइनस माइनस 3, सो माइनस और फिर b की वैल्यू क्या थी, minus 3, so I am putting this into bracket upon a was what, 1, so I am putting 1. Is it clear? So minus 3 upon 1 is what, plus 3 upon 1. Is it clear friends? So that is equal to what, 3. 3 upon 1 is what, 3. So when I add these two zeros, ये अल्फा प्लस बीटा जीरो से ऐड किए तो मेरे को आंसर 3 मिला. Is it clear? And that should be equal to what, minus b upon a. So that is also equal to 3. So hence my relationship of zeros and coefficient is verified. Is it clear? So this is in the case of sum of zeros. Now we are going to verify the relationship in case of product of zeros. So product of zeros में देखें, product is what, the multiplication of zeros. So what will be the multiplications of zeros, alpha into beta, right? So alpha into beta करें तो ये दोनों को multiply करो. What is my alpha, 1 into beta is what, 2. So 1 into 2 is what, 2. Is it clear? So product of zero का आंसर मेरा क्या आया, 2. Is it clear? Now that should be equal to alpha into beta should be equal to c upon a. So that should be equal to c upon a. So c was what, the constant term, and a was what, the coefficient of x square. So here in this polynomial, what is the value of c? C is the constant term, so it is 2, and upon coefficient of x square का coefficient क्या था, a, that is 1, so 2 upon 1, so it will be what, 2 upon 1, so answer will be what, 2. So here also when I multiplied these two zeros, alpha into beta, I got 2, and that is equal to the relationship of coefficient, that is c upon a, that is also equal to 2. So this way friends, we verify the relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. Is it clear friends? So now in this session we have learned many things. First of all, we have learned how to verify the relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. But before that, we have also learned that if a quadratic polynomial is given, how can we find the factors of a quadratic polynomial? Is it clear friends? Factors, how we found out the factors, by splitting the middle term. Okay, and then from factors we found out the zeros of a polynomial. This is also very important. Is it clear friends? So hope you have understood this topic. So students, with this we end this topic over here. Hope you have understood the topic very well. Thank you very much. Thank you students for watching this video. To view our more videos, please do not forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you can view our latest videos. For any kinds of guidelines, queries, doubts, suggestions, always feel free to write to Om sir in the below given comment box. Also like and share these videos to your friend circles so that we can know how we can assist you in making more value additions. Thank you very much.